Assalamu alaikum students. Unit number 7 वेक्टर्स। तो पहली चीज वेक्टर्स के बारे में जो लिख रहे हैं हम वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फॉर देयर डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स. On the other hand, the physical quantities which require only magnitude for their description are called scalars. So scalars can be described by their magnitude only, but vectors can only be described on the basis of two further quantities, one the direction, the other magnitude. Examples of vector quantities you know: displacement, velocity, acceleration, weight, force, momentum, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स etc. ये हमारे पास क्वांटिटीज क्या हैं? दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर. जनरली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट ए बी. ए बी को मैं डायरेक्टेड लिख देता हूँ विद इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वी, और दिस इज द नोटेशन. वेक्टर क्वांटिटी is also denoted by bold letter. इसको डिनोट करते हैं बोल्ड लेटर से भी, या फिर वेक्टर को वी से डिनोट करते हैं विद एरो अबव इट और अ लाइन बिलो इट, और विद ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट with initial point A and final point B. After it, students, we have a vector has two quantities, one its direction, the other is magnitude. AB, यहाँ लिख देते हैं magnitude of V is equal to AB is denoted by AB mod sign or V mod. So इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड और नॉर्म भी कहते हैं. मैग्नीट्यूड, it is also called norm or length of the vector. Magnitude of a vector, norm of a vector, length of the vector, denoted by V and absolute sign. After it, the direction of vector. What is the direction of vector and how can we write the direction mathematically? We have a method to write direction mathematically. How can we write? We must know this fact that V by magnitude, बल्कि इसको ऐसे लिख देते हैं, direction of V is denoted by V hat and is V vector by its magnitude, right? Or we can write V hat is equal to vector by its magnitude and is called unit vector of V. It is unit vector of vector V, also called direction of V, and is denoted by V hat and is equal to V by its magnitude. If terminal point B of a vector AB, initial and terminal point AB coincide, A and B coincide, then it is null vector, zero vector. देखें, एक ही पॉइंट है ए बी कोइंसाइड कर रहे हैं. कोइंसाइड का मीनिंग है वही पॉइंट ए और वही पॉइंट बी है. इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो गए, तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे तो वेक्टर विल बी कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर. इट्स मैग्नीट्यूड विल बी जीरो, डिनोटेड बाय ए बी इज इक्वल टू जीरो, नल वेक्टर. इसको जीरो पे भी एरो डाल देंगे या उसके भी अंडर साइन डाल देंगे, और इट कैन बी रिटन ए बी zero with a line under it to show that it is a vector. इसके बाद 3 to 6 pages students इस पे लिखा two vectors are said to be negative as for each other if they have same magnitude but opposite direction. And
मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, ये भी देख लेते हैं. इफ अ वेक्टर v is multiplied by a scalar, then its magnitude increases with same direction and opposite direction by positive and negative scalar respectively. देखें स्टूडेंट्स, इसको स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई है. इसमें लिखा हुआ है तो इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, स्केलर कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, राइट. सो पॉजिटिव स्केलर से या नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगी, सेम डायरेक्शन रहेगी अगर पॉजिटिव स्केलर है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी अगर नेगेटिव स्केलर है. फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं दैट दिस इज अ वेक्टर v. अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इज अ स्केलर, राइट. 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपली ये डबल हो जाएगा. v मल्टीप्लाई बाय 2, it becomes 2v with the same direction, and if we multiply it by -2, so it becomes -2v. Keeping direction same, the magnitude gets doubled, right. If the positive scalar is getting multiplied by a vector, if negative scalar, the direction gets opposite by increasing the magnitude. Okay students, यहाँ पे काफी important definitions भी हैं. Two vectors are equal if and only if they have same direction and same magnitude. Remember that if they have same direction and same magnitude, then the two vectors will be called equal to one another after it. Two vectors are parallel. Two vectors u and v are said to be parallel to one another, parallel to each other, if and only if they are scalar multiples of each other. Mathematically, u is equal to c times v, or v is equal to c times u, where c is a scalar. देखें c हमारे पास एक स्केलर है और c को अगर u से मल्टीप्लाई करें तो v बनता है, या c को v से मल्टीप्लाई करें तो u बनता है. एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर बनता है. These two are parallel to one another. ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज में अप्लाई भी करेंगे, राइट. एक्सटेंसिवली यूज्ड है ये एक्सरसाइज में.